Good afternoon, one and all present here. I, Kushag Vikram, Assistant Professor, Department of Legal Studies, Jharkhand Rai University, Ranchi. Welcome you all on this expert talk. It's my privilege to welcome Dr. Khalida Rahman, HOD of Legal Studies, and Professor Anuradha Sharma, HOD of Computer Science and IT, to be with us today. I also welcome all the faculty members and dear students. It's my pleasure to be an organizer of this expert talk on the topic software patenting in India, organized by Department of Legal Studies and Department of Computer Science and IT, Jharkhand Rai University, Ranchi. As we start, there is an important announcement for the participants. Kindly mute your audio and video during the session. If you have any query, kindly write it down in the chat box. I am honored to introduce Mr. Vignesh Kaimal. Mr. Vignesh is currently working as legal counsel at CISA Information Security Private Limited. He has worked on trademark and patent filing and worked at Center for Environment Education, Research and Advocacy. Mr. Vignesh has also done many legal research such as on environmental compliances for special economic zones, software companies, shipyards and manufacturing industries, on Specific Relief Act, Negotiable Instrument Act, and also on Industrial Dispute Act, and on various policies and regulations. Mr. Vignesh has written article on CSR and on corporate governance and sustainability. He has also written many legal blogs such as Procedure of Merger and Acquisition in India, Laws related to online marketing, Critique of Facebook stock split of 2016, Legality of demonetization, and many others. Today, Mr. Vignesh will enlighten us on software patenting in India. A very warm welcome to you, Vignesh, sir. Now the dice is yours. Sure. Hi, thank you, Kushagra, for this introduction. So I shall be sharing my screen now. Please let me know if it's visible. Yes, it's visible. Sure. So, I would be referring the Bear Act as well while explaining some provisions, and I shall also be, using my presentation. So, please, bear with me if I'm searching for some files while I'm trying to, make a point through. So, regarding today's presentation, I have been told that I have to address the meeting about with software patenting in India, about software patenting in India. So, as Kushag has already introduced all of you about me, so I wouldn't waste time in introducing you further. So, I'll give you a gist of it. Broadly, we will talk about what is patentable as such, generally what is patentable in India other than softwares. Then we will, gradually slide into softwares, as in what is softwares, what is the IPR treatment appropriate for softwares, and what is the, law relating to the computer related invention. It's called CRI. What is the legality of CRI in patenting in India? So let's just start. I will also be referring to some sections in the act. So before I begin, let's just start. As I begin, I'll introduce what is patentable as such. So any subject matter, any product or a process is patentable in India if it meets these four criterias. That is, A, it should be a patentable subject matter. B, it should have an industrial applicability, and C, it should be novel with an inventive step. So, these are the four criterias which one has to follow. So, I will talk about each of them in detail. Regarding what is a patentable subject matter, now, if we refer the act on what is an invention, uh, patents are given to invention. So what is an invention? When you see, you find that any new product or a process which involves an inventive step or is capable of industrial application is patentable. Now, this new product or process, this term is a very blanket term. It can involve anything which is novel, which has inventive step, which is capable of industrial application, but is not hit by the
provisions of Section 3 and Section 4. Now, Section 3 talks about a lot of things, which includes, mere discovery of a scientific principle. You discover a new law of motion, let's say. So that would not be patentable. Uh, you know, 1 second. Yeah, I'm sorry. So if you make an invention which is opposed to public morality, public health, or public order, law and security, it will not be patented. Neither would any method of horticulture or agriculture would be patented. Topography of integrated circuits would again is in patent ineligible matter. It is covered under semiconductors have their own law for. And specifically very important for today's lecture is this barring from Section 3, which bars all mathematical and business methods along with computer programs per se and algorithms from being patent eligible subject matters. I will explain what this bar is exactly down the line, but per se software programs are not computer programs are not patentable in India. And literary, dramatic, or musical work, artistic works, these fall under the purview of copyright, not patent at all. As well as traditional knowledge, TK, which traditional knowledge we in IP circles refer to as TK. So traditional knowledge is dealt with its own biodiversity protection act, and it is beyond the scope of patent. So these are some of the things. Section 3 again, I can show you it in the act. It's a huge list of things which are ineligible, patent ineligible. So I'm just giving you a brief gist of it. Few things you can refer to Section 3 and Section 4, which is another bar for patenting, is atomic energy. Now, any invention related to atomic energy is not eligible for patenting in India. You will not be granted the patent, nor can you apply for the patent. So this is the subject matter criteria of patenting. Regarding industrial applicability, now the second most important feature is of any patent application is industrial application of industrial applicability criteria. Now, this requirement checks if an invention is capable of being made or used in an industry. Uh, mm, you know, uh, any invention has to have some benefit to the people. ठीक है, उसका कुछ कुछ एक टैंजिबल इफेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो, लोगों का जो है भला हो, चाहे लोगों का हो, जनरल पब्लिक ऐसा, या फिर किसी इंडस्ट्री का। आप कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बना रहे हो जो एक काम करने में जिसमें 1 दिन लग जाता था, वो शायद 1 घंटे में हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल का मतलब खाली इंडस्ट्री से रिलेटेड ही नहीं है। इंडस्ट्रियल का मतलब कोई भी यू नो जेनेरिक वेलफेयर हो, जिससे लोगों का जिसका कोई यूज हो, वो पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया है। अब ये जो है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जो केस लॉज में और इन जनरल पाए गए हैं। उसका मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का एक फैसेट ये है कि इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड रिपीटेडली। मतलब आप बार बार उसको बना सके, वो वन टाइम वंडर ना हो। अगर आप कोई ऐसा इन्वेंशन बनाते हो, वो चाहे जितना भी यूजफुल हो, लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही बार बना के वो उसको आप यूज कर सकते हैं, देन इट विल नॉट बी पेटेंटेबल, बिकॉज देयर इज नो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। Similarly, at least one use in the industry मतलब कोई एक बेनिफिट होना चाहिए उसको। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बस इतना ही जरूरी है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक क्राइटेरिया नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेंशन इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। यूजुअली लोग पेटेंट का एप्लीकेशन डाल देते हैं, लेकिन नॉट ऑल पेटेंट्स आर वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है। सो अगेन योर एबिलिटी टू मेक मनी आउट ऑफ द पेटेंट। आपका पेटेंट कोई अपोज ये नहीं करके कह सकता कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा बनाना, एज लॉन्ग एज आप प्रूव कर दो कि वो बेनिफिशियल है और आप रिपीटेडली उसको बना सकते हैं। और एक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का की फैसेट में एक और जो प्रिंसिपल होता है, वो ये होता है कि आपका इन्वेंशन स्पेक्यूलेटिव नहीं हो सकता। आपके पास एटलीस्ट एक ऐसा वर्किंग मॉडल होना चाहिए जो फंक्शन करे। वो मियर स्पेक्यूलेशन या मियर अजम्पशन पे आपका एप्लीकेशन नहीं चल सकता।
So this is all about industrial application. Now coming to the feature of novelty. Now novelty का simple मतलब है newness. Newness as in at the time when you are filing that application, at the time when you are making the filing, that period is called the priority date. आपका पेटेंट की वैलिडिटी आपको प्रायोरिटी डेट से ही मिलती है। तो जब आप वो पेटेंट फाइल कर रहे होते हैं प्रायोरिटी डेट वाले टाइम पे, तब उस पॉइंट पे ये पेटेंट नया होना चाहिए। आपका जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो एप्लीकेशन में सबमिट कर रहे हो कि दिस इज व्हाट माय इन्वेंशन इज, such invention should not have been used anywhere, should not have been sold anywhere, should not have been published anywhere. So ये prior art बोलते हैं। Prior art means what is the state of the technology at the time when you are filing that patent application. So at the time when you are filing, it should be totally new। ठीक है। And there are some now again novelty जो term है, it has not been defined anywhere in the patent act। बट जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में व्हाट इट एक्चुअली मींस इज दैट प्रायरली जो है एट द टाइम ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, जब आपने फाइल किया हो, कोई और ऐसा इन्वेंशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसे इन्वेंशन का पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए। पब्लिकेशन मतलब कोई भी प्रिंटेड रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में इस इन्वेंशन के बारे में नहीं होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन्स में हो, चाहे वो मतलब किसी साइंटिफिक जर्नल में हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल में हो। कोई पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई कमर्शियल मॉडल नहीं होना चाहिए उस चीज का। जब आप एट द पॉइंट व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर अ पेटेंट, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो मतलब वही प्रोडक्ट को बेच रही हो, जो उसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रही हो और उसी प्रोडक्ट के क्लाइंट्स हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट भी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए जब आपने गवर्नमेंट को डिस्क्लोजर दिया हो किसी फॉर्म में, किसी एफिडेविट में, ऐसे इन्वेंशन के बारे में। और सो आई गेट आई गेस आई मेड द पॉइंट ऑफ नॉवेल्टी प्रेटी क्लियर कि एट द पॉइंट ऑफ द इन्वेंशन, when the invention is filed, it should be totally new। Now, the last facet of a patentable invention is that invention should have this feature called inventive step। अब इन्वेंटिव स्टेप को सेक्शन 2JA पेटेंट एक्ट का डिफाइन करता है एज अ फीचर ऑफ इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ, and that makes the invention obvious to a person, not obvious to a person skilled in the prior art। इसका मतलब सिंपल मतलब यही है कि जब आप पेटेंट फाइल कर रहे हो, भले ही वो जो 1 सेकेंड, हाँ, जब आप पेटेंट फाइल कर रहे हो, भले ही वो पेटेंट नया हो, लेकिन वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो रोजमर्रा की जिंदगी में उस काम को कर रहा हो। पर्सन स्किल्ड इन द प्रायर आर्ट मतलब वो, हेलो, या तुषार, आर यू सेइंग समथिंग? No, no, you continue, Vignesh. Sorry, there was some disturbance। Yeah, I'm so sorry। Yeah, तो पर्सन स्किल इन द प्रायर आर्ट जो है, वो कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसको उस स्किल में, उस आर्ट में या फिर उस टेक्नोलॉजी में ऑर्डिनरी स्किल होगी। ठीक है। तो लॉ ये देखता है कि क्या वो आदमी, क्या वो व्यक्ति, जब ये पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया गया था, तो क्या वो सोच सकता था ऐसा काम किया जा सकता है कि नहीं। अगर वो सोच सकता था, अगर वो उसी तरीके से ये काम जो आपका पेटेंट कर रहा है, जो आपका इन्वेंशन कर रहा है, वो अगर वो सोच के निकाल सकता था, वो एंटिसिपेट कर सकता था कि हाँ ये काम ऐसे किया जा सकता है, तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा। क्योंकि इन्वेंटिव स्टेप बाय लीगल फिक्शन आपके इन्वेंशन में एक इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। So these are the four major criterias of a patentable invention। Now I'll come to software patenting particularly। Now, what is a software? If I had to, break it down to a person, explain what a software is. Uh, Software in its base form is a logical instruction which a person gives to a computer, which a programmer gives to a computer, or it is a set of instructions which enables things to be done in a language that machine can interpret or understand. And it is a logic translator for the computer। So what is actually means is that
software is any expression in a language which is अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर को आप कोई एक लॉजिक, कोई एक चीज करने का तरीका आप कंप्यूटर को बता रहे हैं, वो है सॉफ्टवेयर. एक एक बहुत ही बेस लाइन डेफिनेशन अगर दी जाए तो सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ जो है वो क्योंकि मैंने बताया ये एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिक है, तो सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ बीइंग एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिक इज नॉट पेटेंटेबल because all the expressions of ideas are covered under the copyright act. So for softwares we use if you are trying to get a IP protection just for software, you have to preferable medium for you to get that IP protection is Copyright Act. And under Section 2O of Copyright Act, software programs are defined as a set of instructions expressed in words, codes, schemes, or any other form, including a machine readable medium, capable of causing a computer to perform a particular task or achieve a particular result. तो ये अब सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपीराइट के डोमेन में ज्यादा आता है, पेटेंट के डोमेन में नहीं आता. लेकिन इस ये क्योंकि कॉपीराइट के डोमेन में आता है, एक सवाल हमेशा रह जाता है कि ये कौन अब हाथ देखिए है? इतना Students are पानी है requested, excuse me, students are requested to please mute your mic. Continue, Vignesh. या श्योर. Now, patent protection is always a threshold higher protection than copyright protections. So, what it actually means is that copyright only protects an expression, while patent protects not just the expression but also the claims as such. ठीक है. तो कॉपीराइट अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं आप जावा में, तो वो आप कॉपीराइट करा सकते हैं. लेकिन अगर कोई आदमी वो प्रोग्राम सी में लिखता है तो वो भी कॉपीराइट करा सकता है, जबकि दोनों प्रोग्राम सेम ही चीज कर रहे हैं, सेम ही चीज वो कर रहे हैं. तो बिकॉज एक्सप्रेशन जो है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, वो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में. ठीक है. तो आइडियाज आर नॉट कॉपीराइटेड बट द एक्सप्रेशन इज कॉपीराइटेड. लेकिन पेटेंट एक सुपीरियर प्रोटेक्शन इसलिए है क्योंकि पेटेंट में यू प्रोटेक्ट दैट आइडिया, यू प्रोटेक्ट दैट इन्वेंशन ऑफ योर्स. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर्स को पेटेंट प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि रेयरली डू वी सी अ प्रोडक्ट विच इज नॉट बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर प्रोग्राम. आपके वॉशिंग मशीन से लेकर, आपके लिफ्ट से लेकर, आपके रोबोट से लेकर, एआई, मशीन लर्निंग, जितना नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सब सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है. और धीरे धीरे हम उस स्टेज से पहुंच गए हैं जब जो इन्वेंशन हो रहे हैं, जब जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ जो है वो सॉफ्टवेयर एग्नोस्टिक है. एग्नोस्टिक का मतलब सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट, सॉरी, हार्डवेयर एग्नोस्टिक है, हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है नई आने वाले इन्वेंशन. तो इसीलिए एक नीड जो है वो पाई गई है कि सॉफ्टवेयर्स को भी पेटेंट प्रोटेक्शन देना चाहिए. और ये खाली इंडिया में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक ये प्रोसेस था. 1980s 1990s में यूएसए ने पेटेंट्स देना शुरू किया सॉफ्टवेयर को, और यूरोपियन यूनियन में भी ग्रेजुअली पेटेंट्स देना शुरू किया. इंडिया का पेटेंटिंग, सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग 2004 से 2000 शुरू हुआ है. इट्स बिट लेट, बट हमने भी इसकी नीड रियलाइज की है और हम भी इस पे काम कर रहे थे, काम करना हमने शुरू किया है. अब इंडिया में there has been this regulatory ping pong where we've seen regulations going all the way across the spectrum. We've seen India being very lenient as well as India being uber strict. एक कॉमन मिथ है, लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इज easier to get patented in United States than in India, but that's actually wrong. You'd find equal rejections in USA as you find in India, especially after they have got the 2016 Alice judgment from US Supreme Court. So it's difficult to get patents in United States as well, just as it is in India. So Abhi, I'll start with the entire regulation history. In 1999, first time when we heard the term, when this term software program was incorporated into the Patent Act, it was in 1999 via the Patent Second Amendment Bill. And this bill, was a conscious effort by India's part to make sure that
we have patent regime, we have the IPR regime, which is similar to other TRIPS, signatories. TRIPS is again a trade-related aspects of intellectual property rights agreement. It comes under the purview of World Trade Organization. तो इन ट्रिप्स में बेसिकली ये होता है कि सारी कंट्रीज एक अपने लेजिस्लेशंस को, आईपी रिलेटेड लेजिस्लेशंस को एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए एक कॉमन लॉ बनाती हैं, कॉमन लेजिस्लेशन बनाती हैं और अपने ग्रेजुअली नेशनल स्केल पे अपने लॉस को अमेंड करके एक यूनिफॉर्मिटी लाती हैं। तो इंडिया के ऊपर एक ट्रीटी ऑब्लिगेशन था ट्रिप्स के अंतर्गत, इसीलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर पेटेंट्स को पेटेंट एक्ट में ऐड किया और वो जो है सेक्शन 3 के में ऐड किया गया था। सेक्शन 3 अगेन मैंने आपको बताया, सेक्शन 3 उन मैटर्स पे है जो पेटेंट इनएलिजिबल हैं, जिनमें पेटेंट नहीं मिल सकता। तो सेक्शन 3 के में पहली बार 1999 में ऐड हुआ था। फिर ये 1999 का जो बिल था ये एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया था। इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक टर्म ऐड किया पर से टू द क्लॉज 3 सब क्लॉज के। अब ये पर से का मतलब, ये पर से इसलिए ऐड किया गया था बिकॉज दे डिड नॉट वांट द सॉफ्टवेयर्स टू बी पेटेंटेड बाय देमसेल्व्स. They wanted softwares to be patented along with the hardware, to have a hardware component or to have a technical effect component. So per se is not defined in the act, nor is it defined in the JPC report, but a simple dictionary meaning would mean by itself. So the purpose of adding per se was to induce software development, to induce software patents which provided a greater threshold of technological advancement to be patented, but not merely softwares as such. और ये बिल जो है 2002 में पेटेंट सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट की तरह पास हो गया। तो 1999 से 2002 तक वी हैड द टर्म सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया, बट दे वर पेटेंट इनएलिजिबल. In 2004 there was this brief attempt by Manmohan Singh cabinet. At that time Mr. Kamal Nath was the minister in charge. So उनके अंतर्गत एक ऑर्डिनेंस में जो है via an ordinance the government tried to facilitate software patenting, and what they did was they split the section 3K into two components, section 3K and section 3KA. तो सेक्शन 3K में उन्होंने जो है क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने ये बोला कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर से वुड रिमेन पेटेंट इनएलिजिबल, बट अदर computer programs which have technical application to the industry, or when they are combined with the hardware they perform a superior function, they would be patentable. ठीक है, तो ये सेक्शन 3K में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक अमेंडमेंट लाया गया था ऑर्डिनेंस, लेकिन ग्रेजुअली जो है 4 अप्रैल 2005 को रिपील हो गया था पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट में. और this was one of the reasons why it was repealed was that at the time our IT industry was not very developed as we have right now, and we were mostly into outsourcing technologies at the time. Then the government had reasonable fears that once we allowed the patenting of softwares, the MNCs would utilize this, and that would in turn hamper local growth. So this entire effort was, at first they tried to bring the software patenting, but in face of hostile pressure, they went back, and section 3K went back to the way it was after the 1999 bill and 2002 amendment. उसके बाद 2013 में 2004 से 2013 के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी चेंज नहीं आया, कोई मतलब अपने पेटेंट ऑफिस की तरफ से, आपके पेटेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से, ना ही एग्जामिनर की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से. लेकिन कुछ इंस्टेंसेस हुए जिसमें थोड़ा डिस्टर्ब हुआ मामला, जैसे देयर वाज दिस याहू केस वेयर इन वन ऑफ द पेटेंट फॉर पेटेंट फाइल्ड बाय याहू वाज रिजेक्टेड, और that caused some issue, and pertinent to the same, government realized that they cannot put a blanket ban on software patenting.
they thereafter sent out a draft CRI guidelines in 2013. Now these were draft guidelines. The government did not create a proper guideline or on the basis of the same of the 2013 guideline, because they wanted the public consultation. But it was for a period of time until 2015, as you would see. These were the main source of policy which we had for patenting vis-a-vis softwares. तो इसमें 2013 की जो गाइडलाइंस थी, उसमें ये बोला गया कि एज लॉन्ग एज द प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस है, ये अगेन मैंने बताया था इन्वेंशन मींस प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोसेस। तो अगर आपका प्रोसेस कोई भी टेक्निकल इफेक्ट या टेक्निकल एडवांसमेंट लाता है तो वो पेटेंटेबल है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद द हार्डवेयर कोई भी टेक्निकल इफेक्ट या टेक्निकल एडवांसमेंट लाता है तो वो पेटेंट एलिजिबल है। और टेक्निकल इफेक्ट ने भी उस गाइडलाइन ने टेक्निकल इफेक्ट क्या होता है वो भी डिफाइन किया था। तो टेक्निकल इफेक्ट में उन्होंने बताया था हायर स्पीड, ज़्यादा इकोनॉमिक यूज़ हो मेमोरी का, ज़्यादा डेटाबेस सर्च ज़्यादा एफिशिएंट हो, या फिर डेटा का कंप्रेशन बेहतर हो, या फिर कोई रोबोटिक आर्म का कंट्रोल बेहतर हो, या फिर जो है रेडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन बेहतर हो। तो ये सब उन्होंने एग्जांपल्स दिए थे, नॉट खाली ये 5 पॉइंट ही नहीं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने टेक्निकल इफेक्ट को डिफाइन भी किया था और उसके एग्जांपल भी दिए थे। और ultimately law at that point was, if you have a software which along with the hardware component made any technical advancement, anything which was not capable of being done at that point, you could get a patent despite section 3 के saying that you cannot। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस हो गई थी। और सेक्शन 3 सेक्शन 3 के मना करने के बावजूद भी हमें पेटेंट ऑफिस देता था 2013 2015 as long as you could show this thing technical effect। ठीक है, now 2015 में the patent office went a step further। ठीक है, तो 2013 as you've seen in the last slide, it was a draft legislation, it was a draft guidelines। in 2015 Controller General of Patents, Designs and Trademark issued new guidelines which were the most liberal guidelines we've ever had। इसमें उन्होंने बोला कि एक सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल है अगर उसका हार्डवेयर जो है वो नया हो। अगर आप कुछ ऐसा नया हार्डवेयर बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं है, जो अपना इन्वेंटिव स्टेप हो, जिसमें जो नॉवल हो और जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, तो आपको पेटेंट मिलेगा। या फिर आप मतलब इस पे भी मिलेगा आपको, आपको पेटेंट उस पे भी मिलेगा अगर आपके पास जो हार्डवेयर है वो भी नॉवल हो और आपका जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो भी नॉवल हो, तो भी आपको जो है पेटेंट मिलेगा। और अगर आपका हार्डवेयर नॉवल ना भी हो, ठीक है, नॉर्मल इंटरेक्शन मतलब नॉर्मल ही हार्डवेयर हो, नॉन हार्डवेयर हो, मतलब नॉवल ना हो, नॉर्मल ही हार्डवेयर हो, लेकिन आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो नॉवल हो, और दोनों कॉम्बिनेशन में एक नया कंप्यूटर प्रोग्राम और एक नॉन एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, दोनों को जब मिला दिया जाए, जिनका इंटरेक्शन अगर किया जाए, तो ऐसा रिजल्ट आए विच गोज बियॉन्ड द नॉर्मल इंटरेक्शन, ठीक है, ऑफ सच हार्डवेयर एंड सच सॉफ्टवेयर, एंड increases the functionality or performance of existing hardware, then also it is patentable। So this point again is an indication of technical effect। तो या तो आप नया हार्डवेयर बनाइए, या तो आप नया हार्डवेयर या नया सॉफ्टवेयर बनाइए, या तो आप ऐसा नया कंप्यूटर प्रोग्राम बनाइए, ऐसा नया सॉफ्टवेयर बनाइए जो मतलब किसी भी हार्डवेयर के साथ अगर मिला के उसको आप ज्वाइन करके अगर आप काम करेंगे तो जो एंड फंक्शनैलिटी वो बहुत बहुत बेहतर हो। तो इन तीनों चीज़ों पे आपको 2015 की गाइडलाइंस के अंतर्गत आपको पेटेंट मिलता। एंड एक और जो पॉइंट था दैट कंप्यूटर प्रोग्राम व्हेन रनिंग ऑन और लोडेड इनटू कंप्यूटर गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल फिजिकल इंटरेक्शंस between the software and the hardware on which it runs can bring further technical effect may not be considered as an exclusion to these provisions। तो ये जो पॉइंट था, ये पेटेंट ऑफिस ने क्लियरली बोला था कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी नॉर्मल कंप्यूटर हार्डवेयर पे अपलोड किया जाए और फलस्वरूप जो है वो एक बियॉन्ड नॉर्मल एक रिजल्ट प्रोड्यूस करे, तो ओवरऑल वो जो प्रोसेस है वो इन्वेंटेबल, वो आपका पेटेंटेबल होगा।
उसके बाद 2016 में we had another guidelines which were given by Controller General of Patent Designs and Trademark, and this was a complete U-turn in policy. Again, just a year earlier they were most liberal, and 2016 was the most strictest policy we've ever had in India. In this policy, novel hardware requirement was made mandatory. इसमें अगर आप देखेंगे कि आपका हार्डवेयर भी नया हो सकता था, सॉफ्टवेयर भी नया हो सकता था। इसमें सॉफ्टवेयर नया हो ना हो से मतलब नहीं है। आपको हार्डवेयर जो है आपका, वो आपका बिल्कुल नया होना चाहिए, और हार्डवेयर शुड बी सच विच वाज, मतलब आपका सॉफ्टवेयर, इट डजंट मैटर हाउ योर software works, but your hardware should be new. So that hit a lot of IT companies in India, because who were majorly into creating new products. And इस 2016 गाइडलाइंस में जो टेस्ट दिया गया था, वो 3 स्टेप का एक टेस्ट था 2016 गाइडलाइंस में, जो पेटेंटेबिलिटी एक सॉफ्टवेयर की समझने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। पहला था that it should, the examiner, the person who is reading the patent application, should identify what the actual contribution of the entire process is, and he should deny the patent application if he finds out that the contribution was merely a mathematical business model, or was based on an algorithm. And there was a requirement of novel hardware or combination to be in both computer programs as well as hardware before proceeding to other steps of patentability. मतलब कि ये जो आपका एग्जामिनर है, उसको चेक करना था कि क्या इस इन्वेंशन में नया हार्डवेयर यूज किया गया है। अगर ऐसा नया हार्डवेयर नहीं यूज किया गया है, तो वो जो है आगे की स्टेप्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी, जो कि नॉवेल्टी है, जो कि मतलब आपका इन्वेंटिव स्टेप है, नॉन ऑब्वियसनेस है, उस तक वो जाएगा ही नहीं अगर मतलब एक नॉवल हार्डवेयर यूज ना किया गया। सो अगेन, software patenting was really pygmied, I would say, by this move. And there was this tag of hardware which was now made mandatory on everybody else. Now, in 2017, guidelines changed again, and this was due to vehement opposition which was faced by the government due to these guidelines. ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, उसने रियलाइज किया कि ये अगर हम ऐसे ब्लैंकेट बैन डाल देंगे सॉफ्टवेयर पे, तो एफडीआई हमारे आईटी सेक्टर में हिट करेगा। तो उन्होंने भी प्रेशर डाला कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स पे, और 2017 में एक नई पॉलिसी आई which was made by the controller after discussing with several in-house counsels, by several law firms, institutional bodies. And 2017 guidelines was again a mix of both 2015 as well as 2016 guidelines. Moved the novel hardware feature. ठीक है, आपका हार्डवेयर अब नया नहीं होना चाहिए। आपका कोई नोन अगर हार्डवेयर है, आप उसको लेकिन नए तरीके से, आपने इन्वेंट नहीं किया है वो हार्डवेयर कमर्शियली पहले अवेलेबल है, लेकिन आपने उसको ऐसे यूज किया जैसे वो पहले कभी यूज किया नहीं गया हो, अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर। तो आपका जो एंटायर प्रोसेस होगा वो पेटेंटेबल होगा। आई विल एक्सप्लेन फर्दर व्हाट आई मीन बाय द प्रोसेस एज सच। आई एम प्रीटी श्योर दैट पीपल who haven't studied patent law would find it difficult to understand as of now. So 2017, just for the sake of this presentation, I would say that 2017 guidelines was a mix between 2016 as well as 2015 guideline. It was done by the government in the face of vehement pressure. Now, while all of this was going, we had a savior from Tunisia. एक inventor थे, उनका नाम है फरीद अलानी थे, क्या वो he's still alive. Mr. Farid Alani was a Tunisian inventor who had filed a patent in India via the PCT route. PCT route for the I've been told that there are non-lawyers in this session as well. So for them, I would just say that PCT route just means a route wherein a way of filing patent application in multiple jurisdiction at one time. So Mr. Farid Alani, being had filed a patent in France, and using PCT route, he had filed application similarly in India as well and US as well. और उनके इन्वेंशन का नाम था मेथड एंड डिवाइस फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज ऑन द वेब. Now, what the facts of the case was that he received a first examination report in which objections were raised on his inventions.
Now in any patent application we have to mention claims. Claims are actually the part of the invention on which we get protections. So he had total 14 claims. Out of his claim number 1 to 8 were about a computer program, and the patent examiner said that since they relate to a computer program they are not patentable. And claims from 9 to 14, since they used a hardware which was already known, examiner further said that the hardware components, hardware claims from 9 to 14 lacked novelty and inventive step. So, and as a result, his application was rejected. He filed an appeal before the, I'm sorry, he filed an appeal before the Intellectual Property Appellate Board, and IPAB again dismissed and said that his invention did not disclose any technical effect or advancement. And as a result of the same, he filed a writ petition in Delhi High Court challenging the order of IPAB. Now, Delhi High Court took in consideration the draft guidelines in 2013, CRI guidelines in 2016, as well as the CRI guidelines of 2017. And taking all of these into account, Delhi High Court gave a very progressive judgment vis-a-vis patent landscape, wherein they directed the Indian Patent Office to re-examine the patent. Now the court said कि जो actual रेशियो था वो ये था कि टेक्निकल इफेक्ट और टेक्निकल एडवांसमेंट जो है जैसा कि 2013 गाइडलाइंस में था, उसके तहत जो है जो प्रेजेंट पेटेंट है, जो मिस्टर अलानी का पेटेंट है, वो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लाता है। और क्योंकि सिर्फ उसमें एक सॉफ्टवेयर, एक कुछ क्लेम्स में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड कोर्ट इवन फाउंड दैट इट वाज नॉट merely a software which had to be uploaded on a computer, which had to be run on a computer. The method of implementation required the hardware to be used in a novel way. ठीक है, तो overall it was a new thing at the time when it was filed. It was filed way back in 2002. So pursuant to the same code, directed the IPAB, the patent office to do another examination. Patent office, being Indian Patent Office, examined and then rejected the application, and then Mr. Rani had to go to another IPAB hearing, which finally took place sometime in July 2020, and he got his patent. So post Farid Alani judgment, there is we've again gone back to 2013, 2015 era. So this is a timeline of Farid Alani, the entire patent grant. So yeah, as I was saying, right now, as of now, the law is simple. To get a software patent, you have to have a process. एक process को ही मिलेगा, एक invention, एक particular product को नहीं मिलेगा आपका patent। और उस process में 3 component होने चाहिए, एक software होना चाहिए, एक hardware होना चाहिए, और दोनों software और hardware ऐसे काम करने चाहिए कि जो end effect हो वो that would lead to technical effect. Technical effect जैसा मैंने आपको पहले समझाया था, टेक्निकल इफेक्ट मींस उनका जो एंड रिजल्ट हो वो इस इन्वेंशन के इंट्रोड्यूस करे जाने से पहले कभी ना किया गया। सो आई वुड गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल। Now, this is Dadaji ka airbag kind of an example, wherein elderly people, they are prone to fall down. So this is a system which which bursts out the airbag to falling people to save them from injuries. Now, now try to understand that it is a combination of both software and hardware, and there would be sensors in this system, in this clothing, which essentially a person has to wear, which would be sensing when the elderly person becomes airborne, when he loses his balance, he or she loses their balance. And then there are sensors which would find out what is the orientation, what direction is that person falling, and there would be a threshold at which calculate sensors will calculate a threshold at which the airbags would be activated. Now if you you know read this entire invention as such, it does not just have a software component, it does not just have a hardware component as well. It is a mixture of both, and both these mixtures create a technical effect, as you can see, which was never
done without it. Like टेक्निकल इफेक्ट का मतलब बेसिक एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है टेक्निकल इफेक्ट की, कि आपका इन्वेंशन ऐसा काम कर रहा हो जो इससे पहले करना मुमकिन ही ना हो। तो इससे पहले अगर आप देखोगे, इस इन्वेंशन से पहले बहुत ही मुश्किल था एक किसी भी बूढ़े व्यक्ति को गिरते समय उनकी उनकी जो है उनको सीरियस इंजरी से बचाना। So this is one of the examples I would give. I have another example with me, would be an examination hall surveillance tool. Now, this is to prevent children, students from cheating in examination hall. Now, this would be the entire invention, okay? So, and it would have components of both software as well as hardware. The cameras would be installed in the examination hall, with sensors and software components that calculate, your head movement. If you move your head beyond a particular threshold, it would, create an alarm as such. So this is again has a software component, has a hardware component, and shows a technical effect. And as a whole, hence it is patentable. Now, if you just write a program which for you know uh, for raising an alarm when the angle of a head movement reaches a particular threshold, it will not be patentable. You need to have a hardware as well. And if you just have an hardware, it is not patentable as well. You need to have a software as well as a technical effect as well. And one of the another examples I have is a face recognition technology. Now किसी भी law enforcement agencies के लिए face recognition के लिए technology अगर आप use करते हैं, it would again have both components, software as well as hardware. There would be a camera component for data input, with the input being any assigned, input being giving any numeric value and treated via neural networks ke through they are trying to identify a person. Now again, they would have an algorithm which would be which would be stuck with the hardware, and altogether that system would have a technical effect, that is facial recognition, which was never done before. So as a whole, this entire system would get the entire system would get patentable. अगर आप इसको तोड़ के आप लेके जाओगे, आप सॉफ्टवेयर खाली लेके जाओगे, आपने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया है, लेकिन आपके जो है आप एक हार्डवेयर नहीं है आपके पास, तो वो पेटेंटेबल नहीं होगा। अगर आपके पास एक हार्डवेयर है, आपने कैमरा बनाया है, वो पेटेंटेबल शायद ना हो। आपको दोनों का मतलब मिक्सचर ही चाहिए एक टेक्निकल इफेक्ट के लिए। I can even show you some patents which are already been granted by United States. So ये एक पेटेंट एप्लीकेशन है जो प्रूफ पॉइंट नाम की कंपनी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनीज इन द वर्ल्ड, and it is a method and system for malicious message detection and processing. Now just in case आपको अगर पता होगा कि how phishing happens, or how malicious links are sent, मैं आपको एक मैसेज भेजूं और उसमें एक malicious लिंक होगा, आप उसको गलती से क्लिक कर लोगे और आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, उससे आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक पेटेंट है, ये ग्रांट हो चुका है। तो इनका जो प्रोसेस है वो आप समझते हैं। मेथड एंड सिस्टम फॉर malicious मैसेज डिटेक्शन एंड प्रोसेसिंग आर प्रोवाइडेड, ठीक है। एन एग्जाम्पल मेथड इंक्लूड्स डिटेक्टिंग वाया एन इंटरमीडियरी नोड अ लिंक इंक्लूडेड इन द मैसेज, द लिंक बीइंग एसोसिएटेड विद एन अननोन रिसोर्स और अ नोन मैलिशियस सोर्स, ठीक है। तो क्या करता है ये, जब आपके पास कोई मैसेज आता है, तो इनके पास एक इंटरमीडियरी नोड है, एक बीच में इनका एक प्रोसेसर है, जो मतलब बीच में एक इनका एक नोड है जो चेक करता है कि जो आपको लिंक मिला है वो किसी मैलिशियस सोर्स से है कि नहीं। अगर आपके पास है मैलिशियस सोर्स का लिंक, तो वो जो है उसको हैश करके आपको जो है आपको उस लिंक को एक्सेस करने से रोकता है, ठीक है। और अगर आप ये थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, द इंटरमीडियरी नोड मे हैव अ प्रोसेसर एंड अ मेमोरी फॉर स्टोरिंग एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द मेथड, दिस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। सो आई विल अगेन शो यू सम parts of it. One second, I'll show you the claims which will make it much more clear. Yeah. So this
this part which I've highlighted, this essentially is the software component or the algorithm part of it. ठीक है, a method for processing images, processing messages using an intermediary node having a processor and a memory for storing executable instructions to perform the method comprising से ये जो है नीचे एक algorithm है, detecting via an intermediary node the link included in the message, the link being associated with an unknown resource or a known malicious source, hashing a unique identifier for each one or more of the recipient of the message, coupling each of the hashed unique identifier with the link to create a unique updated link for each of the one or more recipients. For each of one or more recipients of the message, replacing the link in the message with their corresponding unique updated link. ठीक है, तो वो आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। पहले वो डिटेक्ट करता है कि आपके मैसेज जो आपको मिल रहा है उसमें कोई मैलिशियस लिंक है कि नहीं। वो मैलिशियस लिंक है तो वो हैश करता है उस मैलिशियस लिंक को एक नए आइडेंटिफायर से। फिर उस हैश्ड जो नया आइडेंटिफायर जो हैश्ड लिंक है उससे वो जो है वो पार्टिसिपेंट्स को भेजता है। वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मैलिशियस लिंक खोलने से बच जाते हैं। अगर वो खोलते हैं मैलिशियस लिंक तो उनको उनको एक अपडेटेड लिंक चला जाता है जो उनको मैलिशियस वेबसाइट से जाने से रोक देता है। तो दिस इज मोर और लेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड इफ यू जस्ट क्लेम दिस इन एन इन्वेंशन, पार्ट वन इन एन इन्वेंशन, इट यहाँ से मेथड कंप्राइजिंग से अगर आप यहाँ तक अगर आप क्लेम करते हैं इन्वेंशन में तो आपको शायद पेटेंट ना मिले। आपको चाहिए सिस्टम इसके साथ, ठीक है। तो देर हैज टू हैव यू हैव टू हैव दिस हार्डवेयर कंपोनेंट बेसिस an intermediary node having a processor and memory for storing executable instructions, ठीक है। तो this processor and memory together would form the hardware component. I'll show you an easier example. This was a bit difficult. ये ऊबर का एक पेटेंट है। ये पेटेंट है उन सिचुएशन के लिए जब आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते जा रहे हो। आपने राइड बुक की है, आपका कैब वाला आया है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट 302 से आप 304 तक जा रहे हो। और जब आप जा रहे हो आपको एक स्पेसिफिक डिटूर की जरूरत पड़ी। मान लीजिए आपको पेट्रोल पंप जाना है, या फिर मान लीजिए आपको अचानक से खाना खाना है, आप अचानक से किसी रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं। आपके जो निर्धारित रूट है उससे आप डिटूर लेना चाहते हो। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग, पेट्रोल पंप और द डिटूर विच यू वांट टू टेक। So while you are moving from point A to point B, this technology will find a point of interest which is situated on your route itself, so that you don't have to take a longer detour. और उसमें अगर आप पढ़ते हैं, हम देखते हैं, अ सिस्टम इंक्लूड्स अ जीपीएस मॉड्यूल, यूजर इंटरफेस मॉड्यूल, डेटाबेस एंड अ राउटिंग इंजन to find nearby POIs. POIs is nothing but point of interest. Point of interest, again, like I said, can be a restaurant, can be a petrol pump, can be anything, can be a hospital in case of an emergency. So to find a nearby POI in one embodiment, the routing engine identifies the POIs in the database located within the threshold distance from the planned route in Euclidean distance. तो मैं आपको इसके claims दिखाता हूँ। क्लेम ये जो है क्लेम नंबर 1, दिस इज एन entirely purely it's an algorithm. So if you see, determining by a computer a planned navigation route for the vehicle, the planned navigation route having an origin and a destination. So this part talks about point A and point B. आपका पूरा जो route है वो इसमें आप कवर हो जाएगा। Receiving by computer a point of interest search request, the request received subsequent to the departure of the vehicle from the origin along the planned navigation route. आपका डिपार्चर के बाद, सब्सिक्वेंट टू द डिपार्चर, आपकी गाड़ी पॉइंट ए से शुरू हो जाने के बाद आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का सर्च, अगर आप इसमें सर्च रिक्वेस्ट इसमें जाता है तो ये जो है सर्च रिक्वेस्ट आने जाता है। और वो थर्ड पॉइंट है कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक थ्रेशोल्ड डिस्टेंस मतलब कि आपका डे टूर, मान लो आपका जो निर्धारित रूट है उससे वो डिटूर सिर्फ 2 किलोमीटर का ही आप अलाउ कर रहा है। इफ आई कैन जस्ट शो यू दैट 1 सेकेंड।
Yeah. So you are going from 204 to 202. Your point of interest is X. Okay. So it will allow you to reach your point of interest. It will find point of interest throughout the route, which is of a threshold distance of 212. Threshold distance मतलब कि 2 किलोमीटर let's assume. तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाते समय 2 किलोमीटर आप लेफ्ट और राइट ही जा सकते हैं, और उसी में वो जो है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ढूंढ के देगा. This is to prevent the driver from taking you away from the route to a place where you don't know, or to a place which is not safe. ठीक है. तो ये पर्पस ऑफ द इन्वेंशन ये है. तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है, एक थ्रेशोल्ड डिस्टेंस पे वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेगा, और वो एक रूट डिपार्चर पॉइंट बताएगा. रूट डिपार्चर पॉइंट मतलब अगर आप ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो कहाँ से आपको, आपके निर्धारित रूट से आपको कहाँ से डिपार्चर लेना पड़ेगा, कौन सा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिपार्चर होगा आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाने का. So you get the gist of it. Step by step they are describing what their invention will do, what their algorithm is. ठीक है. If you just write a complicated program which step by step does all of this, and if you try to get it patented, you will not get a patent, because again this is merely a expression of a idea. It's merely an expression of an algorithm, and it will be copyrighted. लेकिन जब आप इसमें जो है ये ऐड कर देते हैं, ठीक है, this is your hardware components in the invention, which is a system for providing routing to a point of interest, comprising of a database is a hardware, a GPS network, which is a hardware, a routing engine would, again, I believe, would be a processor to calculate the distance and things like that, and a user interface module, which would be any tablet or a device on which this change is shown. So this is again patentable. So going back to the point, you have to have these three: software, hardware, and a technical effect. So that will be all. Please let me know if there are any questions. Thank you, Mr. Vignesh, for this enriching session. I would now request Professor Anuradha Sharma ma'am to take up the queries of the participants and propose vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Before I propose a vote of thanks to our esteemed speaker, I want to take up some questions which are asked by our participants. Sir, the first question is, how is the software patenting process in USA is different from the process in India? You have explained it bit during the session, but I request you to please repeat the process once again so that our students will get to know about this. Sure. Now, software patenting in US now, if you look at the origins of the Silicon Valley, origins of the IT transformation, the entire process, US has been in the heart of it. So it was always very easier to get software patents in US. There was a time, once upon a time, when it was easier to get a patent there than it was in India. Now, this was not because of the regulations as such, it was because of other factors, which included that there were more software examiners, patent examiners as such in United States than they were in India. And even today, that's the case. US has some 8,000 patent examiners, while India has some 130 patent examiners. So they have a more educated and a more bigger workforce vis-a-vis software patents, who would identify this thing I've told you, right? This software plus hardware plus technical effect. This combination, there was much more mature workforce to understand this and invent things in on these lines. So that was this societal aspect of it. Legally, the process was much easy, but then we've had two judgments. One of them was a Dahmer judgment, and then there was this Angel Corporation judgment. So
and there was this Alice Corporation judgment as well. So after these strings of judgments in United States, the process there has become a bit stricter, and USPTO has their own guidelines, which they started implementing in 2016, wherein the process was made much more stricter for USNs. In India, the process has always been strict, except for this period of 2013 to 2015, that era. Until 2011, the process was always strict, and we've had Yahoo losing out on a patent in 2011, which put a lot of pressure on the government to liberalize the law. So. Except for that 2011-2015 period, we've always had a stricter law. And again, one particular point in here as well. Right now, after this Farid Alani judgment, there is this uniformity in law in India, US as well as Europe. So अब कोई difference नहीं बचा है. Everywhere it's the same threshold. As you can see on my screen, you have to have a software, you have to have a hardware, and both of them combined should produce a significant technical effect. Okay, thank you, sir. There is another question. Sir, as a few students are very new to this topic, software patenting, so they want to know what is the need of software patenting? Like why it is required to get the software patent? A patent, when you get a patent for your invention, you get much more stricter rights than you get for a copyright. For instance, copyright, as I've said, copyright is just for an expression. You can express, not for the idea, just for an expression. So you can express one thing in different ways. You can touch your nose like this, you can touch your nose around your head as well. But the patent is given, patent gives you protections for the claims, and that claim, when you define that claim in a patent application, it is touching the nose. Like, you get protection for touching your nose. You touch it anyway, you get protection. So that's why, to get a patent is a superior form of protection for your idea than getting a copyright is. And every new invention which we see coming, especially post 2010, especially AI, blockchain, you get machine learning tools, you get any significant change in the technology which we see comes because of software. So it is, really pertinent. World has reached the stage where we need to analyze why we should give more patents to software, and why we should move past that copyright threshold. Okay. Sir, there is one more question. How can companies leverage their positions with a patent? Their companies will have to, it depends on what stance they take. Companies can have an aggressive patent policy, wherein they try to get as many patents as possible, and try to dominate the market. They can also have a very defensive policy, wherein they get strategic patents in the industry. Like there are industries progressing from one stage to the another, and you get a critical invention filed, wherein all the other stakeholders of the industry are now dependent on your patent to get it, to get their products going. So you can have a very defensive policy like that as well, strategic patenting policy, as like we call it. You can also, there are multiple revenue based options as well. You can license your invention, you can export your invention, you can make sale of your invention, you can market your invention yourself. It gives you immense position in the market, and especially if you are a company which is looking to get an IPO done, which is looking to get get a fair valuation, get fair investment done. Why, either through venture capital route, or through an IPO route, it gives your company significant valuations to have a patent portfolio, a strong patent portfolio with you. Thank you, sir. And there is last question, sir. What benefits do patents holder for computer-related inventions? Like after getting the patent of the software, what are the benefits they are getting from it?
Again, you don't get it just for the software. I've told you, software, hardware, but it's technical effect, and benefits can be, multitude. You can prevent any one person from using that technology. You can prevent absolutely anyone who is in that field from using that technology. You can sell your own technology. No one will have the rights to sell it other than you. Just like you have property rights, you have a movable property. Just like you have a right to a movable property. Just like a right to a title, you will get all those rights. You have the right to license it. You have the right to export it. You have the right to stop export to a particular country. You have the right to destroy it if you want. So you get all those ownership rights of which we talk about in jurisprudence to the patent holder. And again, it's just for 20 years. After 20 years it becomes public, everyone can use it. Okay. Thank you so much, sir, for handling the Sure. this question so smoothly, sir. There is an important announcement. Students, feedback link has been shared in the chat box. All are requested to fill the feedback link. Or your feedback are very important for all of us. Now it's time to propose a vote of thanks. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. Honorable Registrar Sir, our most valued invited speaker, Mr. R. Vignesh Kamil, Legal Counsel, SISA Information Security Private Limited, faculties and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to propose a vote of thanks on this event. I, Anuradha Sharma, on behalf of Jharkhand Rai University and entire team, would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Mr. R. Vignesh Campbell, for his presence and contribution to make this event wonderful. Sir, the session was very informative and knowledgeable for all the participants. The way you explained the need of software patenting, the process of software patenting was very appreciable. You briefed the evolution of software patenting in India. You also explained that what are the necessary requirements, both hardware, software, and technical effect that need to be fulfilled for getting a software patent. Thank you so much for such an informative session. The session is going to be beneficial for both the students and the faculties. I think जो प्लानिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पेटेंट के लिए और जिनको अभी तक आइडिया नहीं था कि सॉफ्टवेयर पेटेंट करने से क्या फायदा मिलने वाला है, अब ये दोनों ही जानते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है. Once again, a heartfelt thank you to sir. Now I extend my gratitude to our Honorable Registrar Sir for providing us the opportunity and platform for organizing such events. Currently, he is not present in the meeting, but he always inspired us for organizing such event. A special thanks to Dr. Khalida Rahman ma'am for planning and organizing this event. I must thank the organizing team for their contribution and coordination in making this event a grand success. I may like to express our sincere thanks to our technical team, Mr. Kumar Amrind and Mr. Sapan Datta for providing all the technical support. A wide round of applause and thanks to all the students who joined us and made the event successful. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us making this event a grand success. Thank you one and all present here. All the students, please fill the feedback link before leaving the meeting. Thank you to one all present here.